is which is study of rocks. So rock, what is rock? It is an aggregate of minerals. It is a very simple, you can say, aggregate of minerals. तो हमारे गोटे रॉक रे कोन मल्टीपल मिनरल्स थाई परंती. तो गोटे रॉक कैन बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मिनरल ता तुम कहि परबो पॉली मिनरल और गोटे मिनरल यू कैन से रॉक यू कैन से इट इज मोनो मिनरल. तुम मोनो मिनरल भी कहि. सो तो रॉक में दीटा टाइप रो कहि परबो. गोटे होची पॉली मिनरलिक, गोटे होची मोनो मिनरलिक. तो मोनोमिनरलिक कहले हमें कहबा गोटे रॉक दैट कंसिस्ट ऑफ more than 90% of a single mineral. गोटे सिंगल मिनरल तादरे more than 90 to 95% जि थिबा ताल ताको कहंदी मोनोमिनरलिक मिनरल. तो तुमे पाई परिबो more than 90% of a single mineral. तो हम एग्जांपल ले परिया गोटे होची ड्यूनाइट. ड्यूनाइट इज अ रॉक. It is a monomineralic rock which consists of olivine. Or most familiar example you can take marble. Marble is consist of calcium carbonate. It is a monomineralic rock. जोतरे खाली तुमे कोन पाइबो CaCO3 बा कैल्साइट पाइबो. खाली कोन पाइबो कैल्साइट. सो मार्बल नहीं परिबो, ड्यूनाइट नहीं परिबो एंड विथ टाइम तुमे आउरी आगु को पडिबो. पॉलीमिनरलिक रॉक पूरे तुमे ग्रेनाइट नहीं परिबो. ग्रेनाइट बासल्ट जानथिबो है ना. सो ग्रेनाइट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार. जेमति बासल्ट कंसिस्ट ऑफ तुमरो ओलिविन, पायरेक्सिन इशु. तो सेगुरा सब मैं हमें क्लासिफिकेशन रे पढिबा कि हाउ अ रॉक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड हाउ दोज मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज विद इन द मिनरल. ताकर रॉक रे केते परसेंटेज अछि से अनुसार में देखो मेजर मिनरल कहि परिबो गोटे रॉक रो जोड़ा हमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार कहउछन. ग्रेनाइट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज प्लस फेल्सपार. सो जो क्वार्ट्ज फेल्सपार रहले दोज आर द मेजर मिनरल. ता सहित तुमे बायोटाइट पाउछो कि अदर मिनरल पाउछो जोटा कि माइनर और एक्सेसरी मिनरल तुमे कहि परिबो. तो गोटे रॉक जदी मोर देन 90% गोटे सिंगल मिनरल होछि ताले मोनोमिनरलिक होछ नले पॉलीमिनरलिक. तो जिते भी रॉक अच्छी दे कैन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. तीन टाइप रो वे क्लासिफाई कर पर रॉक को. तो रॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू इग्नियस, igneous rock, sedimentary rock, then metamorphic rock. Igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. So igneous rock, it is directly crystallizes from the magma. So igneous rock, simple, it crystallizes from magma. Sedimentary rock, it is formed by weathering and erosion of igneous rock. Simple, we can say formed by weathering and erosion. तो वेदरिंग इरोजन है तुम्हें नहीं पर रखो. इग्नियस रॉक रो से वेदर हे पर गोटे सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन हे गेला पर सी पुनी वेदरिंग इरोजन है कि पुनी सेडिमेंटरी रॉक हे पर कि गोटे मेटामॉर्फिक रॉक भी वेदरिंग इरोजन है कि पर. तो एनी रॉक कैन बी अ सोर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक. itself sedimentary rock can be a source of sedimentary rock. So metamorphic rock, it is formed by application of pressure and temperature.
जतबे प्रेशर टेम्परेचर गोटे कौन से रॉक ऊपर अप्लाई करिया हमें ताले इट विल कन्वर्ट टू अनदर मेटा मींस होची चेंज हो तो मेटामॉर्फोस हे जिवो बा गोटे अदर रॉक को कन्वर्ट हो सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक विल स्टडी इन दिस सेमिस्टर द इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक तो रॉक फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज अ रॉक साइकिल तापर विल इंडिविजुअली यूज चैप्टर तो फर्स्ट विल स्टडी इग्नियस रॉक then sedimentary then metamorphic so first हम देखिबा what is a rock cycle rock cycle it will start from magma so from magma first there will be formation of igneous rock from igneous rock we will find sedimentary rock then sedimentary rock will convert to metamorphic rock igneous can also convert to metamorphic rock and when we are applying pressure and temperature to a igneous rock or sedimentary rock it will convert to a metamorphic rock but if we continue to provide pressure and temperature to a metamorphic rock so at some point of time that metamorphic rock will melt because metamorphic rock it consists of minerals सब मिनरल गोटे कोन मेल्टिंग टेम्परेचर थाए से गोटे टेम्परेचर पर्यंत से माने विथस्टैंड करिवे आबे गोटे टाइम रे दे विल मेल्ट so when they will melt they will produce magma so magma will produce igneous rock by crystallization process here you will write down weathering and erosion process here pressure temperature and this is you can say melting there are other term also we will use in metamorphic petrology anastasis or partial melting all these things okay so here you only remember ki if we continue to provide temperature and pressure पे metamorphic rock the metamorphic rock को हमें continuously pressure temperature provide करियो तो गोटे टाइम रे it will melt and again it will form magma and the whole process again initiated पुनी से process चलिबो magma रो igneous rock igneous sedimentary rock sedimentary metamorphic so igneous rock that's why it is called as primary rock igneous rock कौन primary rock because it directly crystallized from the magma sedimentary metamorphic sedimentary you can say secondary rock metamorphic you can say secondary or tertiary rock so igneous rock का जो हमरो का primary rock तो एडु हमरो मेन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हबो तुम पेट्रोलॉजी पढाउ चाहछो ताले वी हैव टू स्टडी अबाउट द magma हमको स्टडी करे का विषय magma केना magma रू सब जिंस जनरेट होछ तो magma इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ igneous rock so जहां भी constituent igneous rock रे आसीयो it will come from magma and also different types of igneous rock also depend upon different types of magma बुझना तुम धर कौन सी थिंग तैयारी करछो हला तुम धर कि गोटे आइसक्रीम तैयार करछो तो आइसक्रीम रे तुमे लिक्विड रे जो जो जिंस पकेयो सॉलिड रे सेही थिंग पाइबो सेही भलिया पा सेही टाइप रा आइसक्रीम पाइबो ना तुमे तो वेराइटी ऑफ आइसक्रीम तुम बनेउ चाहछो ताल तुमे वेराइटी ऑफ मेल्ट कंपोजिशन दरकार वेराइटी ऑफ तुमरा कंस्टिट्यूएंट दरकार तुमे डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम बनेया पे तुमे बनेया प्रोसेस जाननो तुमे जानछो जे डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम अछि ता माने तुमे सेही कोन एंड परियो देयर आर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट रू तुमरा प्रोड्यूस हिज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम जदि हमें वेराइटीज ऑफ इग्नियस रॉक प्रोड्यूस होछु जानू छथि हम पाखरे हम ऑलरेडी जानू छथि वी हैव अ नंबर ऑफ इग्नियस रॉक कोटी में कलर हिसाब देखले कोटी डार्कर कलर रॉक अछि कोटी व्हाइटर कलर रॉक अछि कंस्टिट्यूएंट हिसाब देखले क्वार्ट्ज फेल्डस्पार को नै कि ओलिविन पैरिसन नै कि डिफरेंट कंपोजिशन रॉक अछि तो से माने फॉर्मेशन हवा पई मैग्मा भी सेही बडा कंपोजिशन हवा दरकार अदरवाइज हबो कि तो सेति पे हमर मेन फोकस रे अबिका मैग्मा पर कि मैग्मा केमिति हेल्प करू टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ रॉक और
whole total कहले we will study the characteristic of magma or we will study the behavior of magma है ना. First देखिए what is magma. So what is magma? Magma is simple a molten material. देखो molten material this formed by melting or can say partial melting of lithospheric plate or mantle. So it is a molten material formed by melting of lithospheric plate or mantle material. तो mantle part भी किसी मेल्ट है कि तुम्हारा प्रोड्यूस हो magma तापर lithospheric plate partial melting एट टाइम कह जाय all these things are heterogeneous. यदि तुम्हारा homogeneous हेता त माने समस्त गोटे टेम्परेचर रे मेल्ट करता तोला हमें कि कोनोसी थिंग जदि मेल्ट करे चाहू सपोज तुम जे जरी नहीं आसो तादरे लुहा गोटे पकई दब प्लास्टिक नहीं आसो समस्त जड़ेब देखा किए मेल्ट हम प्लास्टिक पार्ट सब मेल्ट हो कि जरी पार्ट मेल्ट हो लुहाटा हम तो जिते लुहार टेम्परेचर आसले से हम लुहार टेम्परेचर आसला मैंने ऑलरेडी मेल्ट हो तो से जो लिथोस्फियर कथा कह जाए भी कौन मेल्टिंग कथा कह जाए वी ऑलवेज यूज द वर्ड पार्शियल मेल्टिंग. पार्शियल मेल्टिंग रा मेकानिज्म ये सब कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपलर वे रे कह गले इट इज समथिंग दैट मेड पार्शियली गोटे जिंस अधा मेल्ट हो गला पार्शियली तार किछि परसेंटेज मेल्ट करि गला काना हेटेरोजेनिटी जदि रहइबा सो डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर वाला सब्सटेंस आदर रहिबे जेतले जहार मेल्टिंग टेम्परेचर आसबे से मेल्ट करे. हां सो जेतले लिथोस्फेरिक प्लेट मेल्ट करे सेरा पार्शियली सबले मेल्ट करत है ना. तो तुम्हें कंटिन्यूअसली जदि तांको टेम्परेचर प्रोवाइड करि चलिथिबो ताले से माने कंप्लीट मेल्टिंग आडू जिबे नहले तुम पार्शियल मेल्टिंग सबले प्रोड्यूस हो पार्शियल मेल्टिंग जोगु तुमरा magma प्रोड्यूस हुए. तो सिंपल कह गले magma होची तुमरा मोल्टेन मटेरियल जोरा फॉर्म बाय मेल्टिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट और mantle material. Then how this melting occurs मोर मेल्टिंग केमिति हुए या मेल्टिंग सब जगह रे हेई परिबो ना ता रीजन होची कोन जियोथर्मल ग्रेडियंट. जियोथर्मल ग्रेडियंट कोन जानिबा आगे जेते हमें डेप्थ को जीवा जेते हमें डेप्थ को जीवा फ्रॉम द सरफेस the temperature gradually increases that is called as geothermal gradient. Increase of temperature with depth. So initially tomorrow up to tomorrow crustal level पर्यंत the geothermal gradient is you can say 25 to 30 degree centigrade per kilometer. This is the geothermal gradient of the earth. It may be higher है पर place to place, may be lower है पर place to place. ओके एंड तुम्हें ग्रेटर डेप्थ को गले ये जियोथर्मल ग्रेडियंट कौन होवे डिक्रीज कर जाए है ना. क्रस्टल पार्ट रे तुमरा जियोथर्मल ग्रेडियंट दवा पे बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स बा बहुत यू कैन से कि एलिमेंट्स अछंदी जोटा कि मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट अछंदी क्रस्टल पार्ट रे ता सहित वोल्कानो वोल्केनिक वेंट रीजन ई सब रीजन में अधिक टेम्परेचर बढ़ियो है ना. किंतु नॉर्मल क्रस्ट अंडर रे जोठी तुमरा ई सब एलिमेंट नाही तो से जगह रे यू विल एक्सपेक्ट अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री पर किलोमीटर जियोथर्मल ग्रेडियंट से रहे. तो हमें टेम्परेचर नउछंती डेप्थ हम जियोथर्मल ग्रेडियंट फास्ट टिक अधिक थाए तापर धीरे धीरे तापर कमी जाए. तो फास्ट अधिक थाए तापर जियोथर्मल ग्रेडियंट धीरे धीरे कम हो डिक्रीज कर जाए है ना. तो सरफेस रु तुम जेते डेप्थ को जाउछो ताले जियोथर्मल ग्रेडियंट इंक्रीज हो. तो सरफेसियल टेम्परेचर हमर केते 25 डिग्री रूम टेम्परेचर सेला गले 25 डिग्री सो 25 रु ग्रेजुअली से माने कम होছে इंक्रीज करी करी तळको जिवे थोड़ी जीरो कर देछि 25 रु स्टार्ट कर पर जेतु टेम्परेचर ता बहुत अधिक बडा 1000 2000 डिग्री टेम्परेचर 25 पे किसी टेंशन ना.
एटा गोटे कथा हला जियोथर्मल ग्रेडिएंट विथ डेप्थ बढ़े विथ डेप्थ बढ़ी माने से टेम्परेचर प्रोवाइड करो कौन सी जिंस को मेल्ट करबा पाई तापर विथ डेप्थ सब्सटेंसेस बा जहा रॉक अछंती कि मिनरल अछंती से माने विथ डेप्थ तांकर मेल्टिंग टेम्परेचर अचीव करबा कथा एटू गोटे टर्म आसो तुमको सॉलिडस कि लिक्विडस तुम गोटे टर्म यूज करबा सब आगो को सॉलिडस और लिक्विडस यूज करा जाएगी द टेम्परेचर below which a substance remain in solid condition. The temperature below which a substance always remain in solid condition. The temperature above which substance melt that is liquidous. धर एग्जांपल लवा गोटे सब्सटेंस धर आयरन अछि तमे धर 700 डिग्री टेम्परेचर दोछ आयरन मेल्ट हिज तो 0 to 700 डिग्री पर्यंत आयरन कौन आइबो सॉलिड रहयो तो 700 degree is the solidest temperature of iron below it will be in solid condition above it will melt कि 700 तार solidest भी कहि पर liquidous कहि पर राइट जदि हमें मिक्स ऑफ सब्सटेंस नबा आयरन प्लस आउ किसी सब्सटेंस नबा हला कि कॉपर नै जियो ताले तांकर मिसिले तांकर अलग गोटे आसे 700 आसे माने अलग आसे सपोज धर हम एतले पानी गरम करछन खाली गरम कले जति समय लागियो तार सहित आउ किसी मिसै देले तारे टिके डिफरेंस आसीबो टेम्परेचर सेवला एठी आसे बट फॉर नाउ तुमे एटा हमें आगु को पढिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रिंसिपल जोटा कि कूलिंग बिहेवियर रे एठी हमें देखिबा कि व्हाट इज सॉलिडस जो टेम्परेचर बिलो गोटे थिंग ऑलवेज सॉलिड कंडीशन रहे ताको सॉलिडस कहते जो टेम्परेचर एबव गोटे सब्सटेंस लिक्विड रहे ताको लिक्विडस कहते तो हमर एठी सॉलिडस दरकार ता माने कोनोसी टेम्परेचर कोनोसी सब्सटेंस will start to melt above its solidus any substance the iron which is 700 degree तार solidus it will start to melt above 700 degree so ताको में melt करया खले हमको 700 degree temperature required करे ठीक अछि तो एटा जे हमर जियोथर्म हला दिस इज आवर जियोथर्म ये को इंडिकेट करछि at this much depth the temperature is this much एतिकी डेप्थ से एतिकी टेम्परेचर रहउछ ए इंडिकेट करछ है this indicates the solidus this indicates the solidus temperature with depth solidus temperature with depth ता मीनिंग होछि सपोज में एई डेप्थ रे अच्छा जहां भी सेडी सब्सटेंस अछन दे रिक्वायर्ड दिस मच टेम्परेचर टू मेल्ट इन ए नॉर्मल क्रॉस रीजन आमे जो जगह से छिड़ाई इन ए नॉर्मल क्रॉस माने ना कोनोसी प्लेट बाउंड्री नो कोनोसी हॉटस्पॉट नो नॉर्मल क्रॉस्टल रीजन कथा कहू कि जेते बेले तुम एति की डेप्थ रे अच्छा यू रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ टेम्परेचर टू मेल्ट माने इठी जहां भी रॉक बॉडी अछंती दे रिक्वायर दिस मच ऑफ टेम्परेचर टू मेल्ट बट द जियोथर्म इज प्रोवाइडिंग ओनली दिस मच ऑफ टेम्परेचर so this temperature is below the solidus माने थोड़ा लुहा कथा भाबो कि ताकू ए डेप्थ रे 700 डिग्री टेम्परेचर दरकार किंतु जियोथर्म सिटी प्रोवाइड करते 400 डिग्री ता माने आमे जेते डेप्थ को जिवा जेते की टेम्परेचर बढ़िबो that temperature is not sufficient to melt substances within the earth जेते तुमे डेप्थ को जीवो सेटा सफिशिएंट नुए जे मोर सब सरफेस मटेरियल को सी कोन कर मेल्ट करे पारि सेति पे तुमे जे कोन जगह रे तुमे मैग्मा जनरेशन हुए नाही जोटी मैग्मा जनरेशन हो माने इट ऑलवेज फाइंड्स ए वे टू द सरफेस वोल्केनाइज हमर हुए नि काहे बिकॉज़ वी आर अंडर we are above the normal crust so normal crust से only temperature increase करे geothermal gradient जो and geothermal gradient it is not sufficient enough to melt substances understood you can write down in a normal crustal region in a normal crust region
the geothermal gradient is not sufficient to melt the rock. So to melt the rock को melt हवा पाई इटी तुम्हें सही particular depth रे suppose एई depth रे हमें कहउछंदी एई जहा substances से melt हो दिरा दिन सब हेले सेठी melt कर पारि यदि सेई जगार टेम्परेचर सडनली एति पन बढ़ी जाए यदि से जगार टेम्परेचर कोनोसी भी रीजन जो तो टेम्परेचर आसी बढ़ी जीवो बा ए रॉक रो मेल्टिंग टेम्परेचर कमी जीवो लाइक बहुत फैक्टर्स जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज कराए नले मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज कराए हां यदि किसीरा फैक्टर एमते रॉक ऊपर अप्लाई हला कि सी तारा हीट कमी गला ये बढ़ी गला तो ता माने गोटे जिंस मन रखिबा सब बळे यदि कोनोसी तुमरो जियोथर्म तला हमर जियोथर्म होला है ना एटा हला धर हमर ये कोन सॉलिडस तो जियोथर्म जोटी सॉलिडस को टच करबा से जगह तुम कोन पाइबो मेल्टिंग जियोथर्म मतलब सॉलिडस को टच करता मीनिंग कोन जेति की टेम्परेचर रिक्वायर्ड होची मेल्ट हवा पाई सेति की जियोथर्म प्रोवाइड करछ इट इज अ कंडीशन तो हमें ए जो जगह रे ए दीटा जिंस को मेल्ट करा हेले कोनोसी गोटे जिंस को बढ़ेबा को पड़ियो आइदर तुम जियोथर्म को बढ़ेइबो नले सॉलिडस टेम्परेचर को कमेइबो दीटा जिंस जदी हेई परिबो ताहाले there will be melting of rock and there will be generation of magma. There will be melting of rock and generation of magma. That means when the geotherm will touch the solidus, then melting will occur. So melting of magma can occur. Melting of magma can occur in three process. तीनटा प्रोसेस हमें कंसीडर करती for the melting of magma or generation of magma. तो हमें जो magma एटी कहउछनी 2000 basaltic magma मागु पड़िबो जनरेशन ऑफ magma पे हमें तीनटा प्रोसेस कंसीडर करंती वन होची lowering of pressure lowering of pressure तथा कहते decompressional melting decompressional melting okay now would you addition of volatile the second one is addition of volatile that is called fluid influx another is your increase in temperature another is your increase in temperature so one is lowering of pressure जो हमें decompressional melting कहते another is fluid influx another is your increase in temperature first में decompressional melting decompression meaning होची release of pressure तो कौन जिंस को कंप्रेस कर रखछ ताको रिलीज कला ताको कहते decompression तो हमें कोनोसी भी नॉर्मल कोस्टल रीजन रे एनी तुम कोस्टल रीजन गोटे कंडीशन चले दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन गोटे प्रोसेस जोटा कि मांटल सब चली था सपोज हमें नबा दिस इज अ कोस्टल रीजन ओके कन्वेक्शन करंट विल इज गोइंग ऑन बिलो इट तो तळे का कन्वेक्शन करंट चलछि तो इटी मोर magma मटेरियल माने बा मोर mantle मटेरियल माने ग्रेजुअली जेतले डेप्थ को जिबे बा डिसेंड करिवे तेतले ताकर टेम्परेचर ग्रेजुअली का हो इंक्रीज करिवो तो गोटे टाइम रे से पुनी राइज करिवे जेतले ग्रेजुअली राइज करिवे ऊपर टेम्परेचर पुनी डिक्रीज करिवे तो सेमती से जेतले डिसेंड करछन्ती हॉटर होछन्ती पुनी जेतले असेंड करछन्ती कोल्डर होछन्ती तो एवला से माने मूव करछन्ती
बट ए माने कोन करछंती दे आर मूविंग एट अ वेरी स्लो रेट बहुत स्लो रेट रे मूव कर तो एठी जो हॉटर पार्ट रहउची मैग्मा रे जो हॉटर पार्ट रहउची ये जहा टेम्परेचर कंटेन करछि इतले ग्रेजुअली ऊपर को राइज करछि इट विल लूज इट्स टेम्परेचर तार कोन टेम्परेचर लूज करछि बिकॉज़ इट विल राइजिंग ग्रेजुअली से धीरे धीरे कोन करछि राइज करछि ठीक अछि फॉर एग्जांपल लियो कि तुम्हें कि मार्केट को जैसे चाहानी तो तुम्हें चाली चाली गलो पुनी चाटा चाली चाली नहीं के आसिलो तो ता भीतर कोन हितो चाटा ठंडा है ऑब्वियसली कहीं ना तुम्हें धीरे धीरे जाओ धीरे धीरे आसो तुम्हें साइकिल नहीं जीव टिके गरम रह तुम्हें बाइक नहीं जीव आउ टिके गरम रह तामाने गोटे गरम जिनस को सपोज धर कि मु तते गोटे गरम बॉल अछि मो पाखे धर सेठी छिराई छु मु तते चाली चाली नहीं कि देई के आसीबी सेतरे टेम्परेचर लॉस हे मु तो आडू फपाट देली जदी ताले से कोन करा तो पाखु पहुंच गला जल्दी टेम्परेचर लॉस हैला नाही तो यही डेप्थ रे यदि ग्रेटर डेप्थ रे मैग्मा मेटल वाला का अधिक टेम्परेचर था यदि कोनसी वे रे से माने सडनली ऊपर को पळे आसीबे विदाउट लूजिंग हीट बा हमें कह परबा कांस्टेंट टेम्परेचर रे से ऊपर को राइज कर जे आइडियाबेटिकल राइज कोन आइडियाबेटिक सुनछो आइडियाबेटिक राइज कह परबा यदि कोनसी वे रे हम आइडियाबेटिकली राइज कर जे ऊपर को ताले से माने they can bring the temperature to the shallower level से माने shallower level को कोन करबे टेम्परेचर ता आनी परिबे तो कि shallower level ले टेम्परेचर ता को से माने बढ़ाई देई परिबे ठीक अछि तो से कंडीशन ता केमिति से माने अचीव करंती कि जेते बेले मैग्मा आइडियाबेटिकली राइज करिवो टू द shallower level without जोटा आइडियाबेटिकली मीनिंग होची without losing temperature then it can increase the temperature at shallower level shallower level रे जते कि जियोथर्म अछि ताकू से बढ़ाई देबो बा shallower level ले सपोज धर ए जगह हमर टेम्परेचर केते अछि तो हम नबा कि 400 डिग्री टेम्परेचर अछि ए जगह रे सपोज धर के तुमर 1000 डिग्री टेम्परेचर अछि ठीक अछि तो ये यदि सडनली पळे आसले एठी की ताले ए जो 400 डिग्री कोन रहबा ताटू अधिक टेम्परेचर हे जिवो यदि अधिक टेम्परेचर हे जिवो ताले एठी सिना 400 रे माने मेल्ट करना दे किंतु अधिक टेम्परेचर हेले मेल्ट हो so this thing is achieved by breaking of this plate ए ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट कोन ब्रेक कर काना लिथोस्फेरिक प्लेट जतले तुमरो कोनोसी मैग्मा पर अछि it is giving pressure so when it will break it will release the pressure ये कोन करियो प्रेशर रिलीज करियो प्रेशर रिलीज कले जो मटेरियल गुरा ता तळ अछंदी से माने सडनली ऊपर को राइज कर they will rise to the shallower level को से राइज करथिबे यदि shallower level को राइज करि गेल ताले यदि सडनली से राइज करछंती they cannot lose the temperature that is called as adiabatical rise which occur in divergent plate boundary could be divergent plate boundary हुए so divergent plate boundary कोन हुए because of breaking of plate magma metal गुरा shallower level को पळे छै हां shallower level को पळे छै जो कि हायर टेम्परेचर से माने प्रोवाइड करछन हां तो ए जगह रे जदी तुमरा होला ए जगह रे तुमरो टेम्परेचर केते देला सपोज 1200 डिग्री थिला तो हठात एठी एते बेले एठी प्लेट ब्रेक कला तो ए जगह रे मैग्मा मेटल जे ऊपर को उठले द जियोथर्म ए जगह रे कोन सडनली 1400 टा ए जगह रे फील होला 1400 टा एक्चुअली लोअर पार्ट रे फील होतला तो जेतु मैग्मा मेटल ऊपर पळेले तो जियोथर्म सेठी सडनली बढ़ी तो ए जगह रे जियोथर्म थिला नॉर्मल क्रस्ट रे या जेते बेले मिडोस रे रीच कंडीशन पळाइतला ताल देखो बहुत कम डेप्थ रे टेम्परेचर सडनली बढ़ी छै एंड इट विल टच द सॉलिडस से कोन करे सॉलिडस को टच करे कोन पय होउची सिंपल adiabatical rise of lower mantle material से माने adiabatical जेतु राइज कर जिवे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर तो से जगह रे माने दे प्रोवाइड द हीट से माने shallower level को हीट प्रोवाइड करिवे तो जियोथर्म बढ़िबो विल टच द सॉलिडस को टच कले से जगह रे मेल्टिंग हे सेट पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री रे मेल्टिंग
बुझला प्लेट ब्रेक जो माने राइज करंती एंड दिस टाइप ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड एज decompressional melting or melting due to lowering of pressure जदि प्रेशर तुमरो डिक्रीज करूची एंड कौन पाई डिक्रीज करूची बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ प्लेट्स हैला तो दिस इज कॉल्ड एज decompressional melting जोटा डाइवर्जेंट प्लेट माउंट जदि हमें कन्वर्जेंट प्लेट माउंट देखिबा जदि हमें कन्वर्जेंट प्लेट माउंट देखिबा ए जगह देखो मोर जियोथर्म टा जहा थिला से आज बट solidus it is changed solidus का कौन चेंज हो solidus टा डिक्रीज करियो जेते बेले हमरा सबडक्शन प्लेट बाउंड्री को हो जो प्लेट टा सबडक्ट करे से ग्रेजुअली मोर तळु जाए तो से सबडक्ट कला परे मोर ग्रेजुअली ता भीतर जेति की हाइड्रेटेड मिनरल अछन ना ओसेनिक क्रस्ट तादर हाइड्रेटेड मिनरल थे से माने डिहाइड्रेट हेबे का डिहाइड्रेट जेहेतु हेबे तो सेत्रु से माने वाटर एक्सपेल कर दैट विल रिमेन विद इन द प्लेट से माने से प्लेट भीतर वाटर वाला रहयो तो जदि कोनोसी थिंग रे तुमे वाटर ऐड करछो ताल तार मेल्टिंग टेंपरेचर डिक्रीज कर तो एडिशन ऑफ वाटर ऑलवेज डिक्रीजेस द मेल्टिंग टेंपरेचर तो जोठी तुमरो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री सबडक्ट करूची ते जगह रे बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन तादरे वाटर एडिशन होची जेतु वाटर एडिशन होची तारा मेल्टिंग टेंपरेचर ग्रेजुअली का डिक्रीज करी जदि भी सेठी जियोथर्म न बढ़ु थाई पारे बट solidus टा डिक्रीज कर जिवा एंड इट विल टच द liquidus सॉरी जो टच द जियोथर्म तो ए जगह रे मेल्टिंग के केमथि होची बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन solidus बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ volatile matter बा एडिशन ऑफ H2 तो ना एडिशन ऑफ H2 से H2 कोठ आछी से प्लेट रो आसीबो बिकॉज तुमरो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो काना जते डेप्थ हो टेम्परेचर बढ़ले वाटर डिहाइड्रेट हो काना तादरे तुम धरो एम्फिबोल हैला कोन इट इज हाइड्रेटेड मिनरल बायोटाइट हैला इट इज हाइड्रेटेड मिनरल कि तुम सर्पेंटाइन हैला हाइड्रेटेड मिनरल जति हाइड्रेटेड मिनरल अछंती तुम जिप्सम हैला तो एगरा सब कोन हाइड्रेटेड मिनरल तो हाइड्रेटेड मिनरल वाला सब जगह एक्सपेल करबे से जगह एक्सपेल कले तो वाटर टा सेटे ऐड हबो प्लेट रे से माने कोन थिले कोटे स्ट्रक्चर रे थिले डिहाइड्रेशन बेले से माने फ्री हे जाय तो फ्री वाटर जति ऐड होची सेते से माने मेल्टिंग टेंपरेचर को अफेक्ट करतो तो मेल्टिंग टेंपरेचर अफेक्ट करे माने दे विल लोअर द मेल्टिंग टेंपरेचर ऑफ द प्लेट प्लेट रे मेल्टिंग टेंपरेचर का लोअर हे जाय तो ए जगह रे तुम्हारा मेल्टिंग टेंपरेचर का होय लोअर हुए बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वोलेटाइल सेतमे याको कोनती वोलेटाइल फ्लक्स बा मेल्टिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ वोलेटाइल मैटर ठीक अछि तो एठी तले माने मेल्ट करिवे मेल्ट कला परे न्यूली फॉर्म मैग्मा वाला सोळे मन रखता दे आर हॉटर एंड लेस डेंसर न्यूली फॉर्म मैग्मा वाला कोन थांते हॉटर थांती और लेस डेंसर थांती से सबुळे ग्रेजुअली दे विल राइज अपवर्ड से माने का करे अपवर्ड राइज करी यदि हम एट देखिबा यदि सबडक्शन प्लेट बाउंड्री कोन हुए एटा तमरो सबडक्ट कला एठी तमरो एडिशन ऑफ वोलेटाइल जो एटा मेल्ट हवा स्टार्ट होला मेल्ट हेले ये कोन ग्रेजुअली ऊपर उठिबो मैग्मा पूरा ऊपर उठले इट विल रेस्ट बीनीथ दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंट हो ओसेनिक प्लेट हो जहां भी प्लेट थी एठी से जगह रे से कोन करियो इट विल रेस्ट हियर तो मैग्मा टा हॉटर थियो जो प्लेट तळे ये जाई लागिवो कोनते अंडर प्लेटिंग कोन अंडर प्लेटिंग से गोटे प्लेट रे लागे तो ता कोन अंडर प्लेटिंग से जगह रे से तले रहिबो त इट विल कैटर हीट इट विल लूज इट हीट्स टू द सराउंडिंग रॉक या तुम गोटे हॉटर जिंस को नै गोटे कोल्डर जिंस रे लगेले कोन हीट ट्रांसफर करिवो हीट कोन करिवो ट्रांसफर करिवो तो इटी से माने हीट उरा याड जो ट्रांसफर करथो ये कंटीन्यूअसली मेल्ट करथो कंटीन्यूअसली मैग्मा प्रोवाइड करथो ये कंटीन्यूअसली हीट प्रोवाइड करिवो त माने ए प्लेस टा जोटा अछि ये प्लेस भी हॉटर हे जो किंतु सेटा ग्रेजुअली हबो हां ग्रेजुअली हबो तोला सबडक्शन जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कोन होतला सडनली मैग्मा टा प्लेट ब्रेक कला सडनली मैग्मा राइज कला सडनली लेसर डेप्थ टेंपरेचर बढ़ी गला ए जगह रे there will be a gradual change in temperature gradually देखो temperature जियोथर्मल ग्रेडियंट टा चेंज हो से जगह
तो जियोथर्मल ग्रेडिएंट चेंज हेले तो गोटे टाइम रे कोन हबो इट विल प्रोड्यूस मैग्मा ए थिंग गुरा सब कोन हबो मेल्ट हबा स्टार्ट करे एटू मेल्ट हेतिले किछि एटू मेल्ट हेबे किछि पर ग्रेजुअली मेल्ट हेले माने गोटे पैसेज बनै देबे मेल्ट हेले कोन पैसेज गोटे बनेबे एटी वोल्कान हला वोल्केनिक आर्क पाइलो कोन पाइलो वोल्केनिक आर्क बायटा को हम कहते मैग्मेटिक अंडरप्लेटिंग प्रोसेस कोन मैग्मेटिक अंडरप्लेटिंग प्रोसेस दीटा जगह देखा हुए गोटे एठी देखा हो सबडक्शन प्लेट बाउंड्री आ गोटे देखा हो तुमरा हॉटस्पॉट रीजन में जोटे हॉटस्पॉट थाइबे सेठी कंटीन्यूअसली मैग्मा राइज करते सरफेस आड हॉटस्पॉट होची जो जगह जोटी के मोर एक्सेसिव मैग्मा प्रोड्यूस हुए अर्थ रो से जगह को कोन हॉटस्पॉट कोन तो हॉटस्पॉट रे सब बेले मैग्मा प्रोड्यूस हुए एंड से ग्रेजुअली ऊपर को राइज करे ग्रेजुअली ऊपर को राइज कले से सेम कंडीशन दो से आसी कोनसी प्लेट तले लागिवो प्लेटा थिकर हबो तो से जगह रे जहां भी से माने हीट आनथिबे सराउंडिंग रॉक को प्रोवाइड करिवे तो सराउंडिंग रॉक ग्रेजुअली मेल्ट हबो वोल्कानो जोटी भी हॉटस्पॉट अछि माने सेठी वोल्कानो 100% हबो जोटी हॉटस्पॉट अछि सेठी कम वोल्कानो एंड एठी वोल्कानो सेम प्रोसेस रे किंतु मेल्टिंग एठी हुए बाय एडिशन ऑफ वोलाटाइल एठी मेल्टिंग हुए प्योरली बाय इंक्रीज ऑफ हीट ए पोर्शन में जो मेल्टिंग हुए इट इज इंक्रीज ऑफ हीट ये जो प्लेट सबडक्टर प्लेट जो मेल्ट हुए दैट इज बाय एडिशन ऑफ वोलाटाइल बुझ ना नहीं डाइवर्जेंट रे जोटा हुए लोअरिंग ऑफ प्रेशर तो एटा लोअरिंग ऑफ प्रेशर इट ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेंपरेचर इट ओनली दिस सबडक्टेड प्लेट जोटा मेल्ट हुए दैट इज एडिशन ऑफ वोलाटाइल एंड दिस पार्ट ये जो पार्ट जोटा अबडक्टेड प्लेट अछि जोटा ओवरराइडिंग प्लेट अछि सेटा जो मेल्ट हुए सेटा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेंपरेचर सो एतिकी ही कॉज अछि फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्मा आउ गोटे कंट्रोवर्शियल थिंग अछि कि हमर अर्थ रे बहुत अछंदी होची रेडियो एक्टिव एलिमेंट सो समटाइम्स की रेडियो एक्टिव एलिमेंट जते हीट लूज करंती दे कैन आल्सो प्रोड्यूस मेल्ट बट इट इज लिटरली नॉट पॉसिबल काहेना रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर रॉक्स आर गुड कंडक्टर में रॉक्स आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम एक लैटेंट हीट ड्यूरेशन थिबो कि केते तुमर हीट कैपेसिटी जोटा केते टेंपरेचर प्रोवाइड कले कि हीट टा बढ़िबो गोटे डिग्री टेंपरेचर बढ़िबो केते हीट प्रोवाइड कले ए सब जिंस भलो नै रॉक रो सेतमे सेटा को डिस्कार्ड करा सेतमे ए जिंस गुरा जोरा अछि एगुरा ही कंसीडर करा जे वन होची तुमर लोअरिंग ऑफ प्रेशर अनदर होची एडिशन ऑफ वोलाटाइल अनदर होची इंक्रीज इन टेंपरेचर बाय कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ मैग्मा तुम कहबे যদি मैग्मा कंटीन्यूअसली सप्लाई होतो से जगह बुझ पाइल